All right, ठीक है. I'll start the screen share. All right, so आज के क्लास में we are going to start with a new chapter, and the new chapter over here is going to be your chapter of our human reproduction. So that is the chapter we are going to start with. तो ये हमारे यहाँ पे नया chapter होगा जो हम यहाँ पे start करेंगे, and we are done with the sexual reproduction in flowering plants, and now we are going to start with this chapter. Now, when we discuss in terms of this chapter like human reproduction, तो यहाँ पे आज की क्लास में हम थोड़ा सा slow जाएंगे, like we'll try to ensure that कि आपको हर एक चीज यहाँ पे समझ आए initially, and then we can have some kind of momentum after some time. सो आज की क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टू अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एसेसरी डक्ट्स एंड योर एसेसरी ग्लैंड्स. सो इनको समझने का आज हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहा. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास इज गोइंग टू बी टू अंडरस्टैंड दीस थ्री टर्म्स ओवर हियर एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस ग्लैंड्स. Okay. Now, when we start with the male reproductive system, so you should know very clearly that the major, like the primary sex organ of your male reproductive system is going to be your testes. Testes are the primary sex organs over here. That's one thing you have to know. Second thing what you have to know here is testes are always seen in pair. So you'll find the testes being present in pair. ये आपको हमेशा pairs में मिलेंगी. And where these testes are being kept? So they have been kept outside the abdominal cavity. So these testes are being kept outside the abdominal cavity in the scrotum. Okay. So within the scrotum, you'll be finding your testes are being kept over here. So within the scrotum, you'll be finding this testes are being kept. अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि दैट व्हाई वी आर कीपिंग दिस टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, लाइक इसको एब्डोमिनल कैविटी से हम बाहर के यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, व्हाई दे आर बीन प्लेस्ड ओवर देयर. देन आंसर इज वेरी सिंपल, दैट टेस्टिस आर द साइट्स वेयर यू विल बी फाइंडिंग दैट स्पर्म फॉर्मेशन विल हैपन. तो ये आपकी वो लोकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी जहाँ पे आपका स्पर्म फॉर्मेशन होते हुए आपको मिलेगा. सो दिस इज द साइट वेयर आई विल बी फाइंडिंग द स्पर्म फॉर्मेशन सीन टू बी टेकिंग प्लेस. सो दिस इज द साइट वेयर द स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. अब क्योंकि मेरा यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, आई थिंक समवन हैज अ क्वेश्चन, आई गेस. ओके, नहीं, ऑलराइट, जस्ट वेट अ मिनट. ऑलराइट, ओके, या, just give me a minute. Let me just log on the device as well so that I will be able to see all of you. All right, okay. Coming back. We have these testes and these are the sites where I now carry you need the right temperature and that temperature will be maintained in the scrotum. So basically जो भी आपका body temperature आपका यहाँ पे होगा उससे around 2 से लेके 2.5 degrees Celsius should be a less temperature in the scrotum. So the temperature in the scrotum should be 2.5 degrees Celsius less than the body temperature. Less than your body temperature. At this temperature, इस temperature के ऊपर आपको क्या मिलेगा होते हुए, that this is the optimum temperature at which आपको sperm formation होते हुए यहाँ पे मिलेगा. So first of all, testes are being seen in pairs. They are being kept in the scrotum. That's a pouch-like structure outside the abdominal cavity. And यहाँ पे आपका temperature आपका हम maintain करते हैं so that we can actually carry out my sperm formation. Now let's do one thing. Let's try to deep dive detail into the testes. कि testes के अंदर detail में आपको यहाँ पे क्या-क्या चीजें देखने के लिए मिल जाती है. So let's have a look at that. Now, the other sense organ, the other sex organs which are located in the pelvic area are going to be a pair of testes you have. Along with that, you have accessory ducts, glands, and external genitalia. So we'll see them one by one. First of all, let's talk about testes. If I just give you a rough idea over here, let's say this is a
section of a testes. Now, what do you get to see in the testes? Now, what you will get to see, you will have some compartments. The testes care, you will get to see a large number of compartments will be seen. Many compartments will be seen in the testes. अब जो compartments आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, all these chambers you can see over there, ना, right? So assume that is a single compartment. ये मेरा एक single compartment है. तो जो single compartment आपको यहाँ पे दिख रहा है, this over here is called as my lobule. This over here is called as your lobule. Now, how many lobules I will get to see in the testes? So you should know that around 250 lobules you will get to see in the testes. So say 250 compartments आपको मिलेंगे यहाँ पे देखिए. Such 250 compartments you will see in the testes. That's one thing you have to know. तो ये एक कपड़ा आपके सामने इससे हम बोलेंगे यहाँ पे लोब्यूल, ऐसे आपको 250 लोब्यूल्स आपको मिलेंगे आपके टेस्टिस के अंदर. अब सिंगल लोब्यूल के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? So we are actually observing the transverse section of the testis. We are, let's assume that हम यहाँ पे हमारा ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारा transverse section of testes. And when I see this section over here, when I see all these lobules over here, in lobule के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? Within lobule, I will find the presence of seminiferous tubules. I will get to see a presence of some structures which I am going to call them as a seminiferous tubule. Seminiferous tubules. अब ये जो आपके seminiferous tubules आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, इनका नंबर यहाँ पे कितना होता है? तो a single lobule can have around 1 to 3 seminiferous tubule. तो ये बात याद रखना है, सिंगल लोब्यूल के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे 1 से 3 seminiferous tubule आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. Now what these structures are known for, या ये स्ट्रक्चर आपको क्या काम करते हैं, या इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? तो आपको याद रखना है कि आपके जो seminiferous tubule आपको यहाँ पे जो मिल रहे हैं, which are like a cord like structure, जो आपको 1 से 3 मिलेंगे आपके सिंगल लोब्यूल के अंदर, इनके अंदर you will find certain kind of cell. So let me tell you over here, when we have a look at the seminiferous tubule. So जब आप when you look into the seminiferous tubules, what do you get to see? तो इनके अंदर आपको मिलेंगे दो टाइप के cells. Inside you will find the presence of something called as my Sertoli cells. And इसके अलावा आपको यहाँ पे एक टाइप के यहाँ पे सेल मिलेंगे which are my germ cells. Germ cells. Now what these germ cells are going to be doing over here? ये germ cell आपके होंगे, they will actually help in the formation of my sperm, right? These germ cells are the one which will ultimately will be used for the sperm formation. इन लोगों का इस्तेमाल करके we can do the sperm formation. तो sperm formation के लिए आपके germ cells का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, right? Sertoli cells जो आपके यहाँ पे होते हैं, the Sertoli cells you have over here. Sertoli cells are the one which are also called as a nurse cell. They are also been called as my nurse cell, and they are going to play an important role in the nourishment of the developing sperm. So ये जो मेरे यहाँ पे cells होते हैं, they will play an important role in the nourishment of the developing sperm. So nourishment जो आपको यहाँ पे हो रहा होगा of developing sperm, ये आपका करेंगे आप यहाँ पे Sertoli cell. So that is one thing you have to know. So Sertoli cell will do the role of nourishment, and germ cell जो आपके यहाँ पे होते हैं, which are also my diploid cell, they lead to a formation of a sperm. तो यहाँ से आपका sperm formation आपके यहाँ पे होगा. These are the two things you have to know in terms of the seminiferous tubule. अब एक और चीज हम याद रखते हैं कि अगर आप लोब्यूल में देखते हो, if you observe the lobule, so lobule के अंदर आपको कुछ यहाँ पे और भी cells आपको मिल जाते हैं. So within the lobule you will also get to see some cells. So what kind of cells I will find in the lobule? So lobule के अंदर you will get to see some cells, and those cells in the lobule are called as my Leydig cells. So आपके lobule के अंदर you will get to see one kind of cells, you call them as a Leydig cells. So याद रखना, Leydig cells आपके seminiferous tubule के अंदर नहीं होते, you will find them lobule के अंदर. So lobule के अंदर between the seminiferous tubule you will find some cells over there, and those cells are called as my Leydig cells. अब Leydig cells आप यहाँ पे क्या करते हैं? So Leydig cells का हम यहाँ पे याद रख लेते हैं. Leydig cells are the one. Leydig cells are the one which are going to release something called as my testosterone. They are the one which are going to release your testosterone. टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन आपका इन सेल्स से आ रहा होता है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि यहाँ से आपका आ रहा था आपका मेल सेक्स हार्मोन, जिसको मेवन कहते हैं आप एज एंड्रोजन, दैट इज कमिंग फ्रॉम द Leydig cells. These are a few important cells which you all are familiar with. So I'm just revising those cells to you again.
तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है, राइट। नाउ फंक्शन ऑफ स्क्रॉटम आपको यहाँ पे होता है टू मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये प्रोटेक्ट करता है आपके टेस्टिस को फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज, इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द टेस्टिस फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज यहाँ पे। एंड द टेम्परेचर जो हम यहाँ लेके आते हैं 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ताकि आपका यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस आपका सक्सेसफुली आपका यहाँ पे हो सके। इतनी चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद। Now let's come back to the picture of testes and let's try to understand few more things. अब जब आप यहाँ पे इस पिक्चर को देख रहे हो, so we have discussed about the testes के अंदर आपको जनरली क्या मिलता है वो हमने यहाँ पे देख लिया। उसके आसपास भी हमें यहाँ पे काफी चीजें यहाँ पे मिल रही है। So let's those things कि आपके आसपास टेस्टिस के आपको क्या क्या चीजें आपको मिल रही है and what are those things are going to function for. So let's have a look over here. The cavity of scrotal sac is connected to abdominal cavity through inlingual canal. जो आपका जो scrotal sac जो आपका cavity है ये आपका कनेक्ट करता है आपके एब्डोमिनल कैविटी के साथ वाया इनलिंगुअल कैनाल के थ्रू। सो इनलिंगुअल कैनाल के थ्रू ये आपको यहाँ पे कनेक्ट करेगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। अगर मैं अपना ट्रांसवर्स सेक्शन निकाल के टेस्टिस को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे कुछ चीजें तो यहाँ पे काफी क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रही है। देन आई कैन वेरी क्लियरली लेबल दैट दीज आर माय सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सो ये मेरे यहाँ पे मेरे सारे के सारे फेरस ट्यूब्यूल्स, ये तो मुझे यहाँ पे मेरा दिख रहा है। इसके साथ साथ आई विल ऑल्सो गेट टू सी दैट यहाँ पे अगर आपको येलो कलर का यहाँ पे आपको जो लेबलिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस कलर का रीजन ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड एज माय एपिडाइडाइमिस। दिस इज कॉल्ड एज माय एपिडाइडाइमिस। सो ये जो येलो कलर का लेबलिंग आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर एपिडाइडाइमिस। अब ये जो एपिडाइडाइमिस आपके सामने यहाँ पे होगा और यू हैव अ सेवरस ट्यूब्यूल्स ओवर हियर। So epididymis is a structure जहां पे आपके स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है। This is where the sperms have been stored. तो स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद अगर आपको स्पर्म्स को कहीं रखना पड़े, so that will be stored over here. तो स्पर्म्स का स्टोरेज, this is the site where the sperms are stored. आपको दो बातें याद रखनी है एपिडाइडाइमिस के बारे में। ये जो आपको कॉइल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, that's epididymis. यहाँ पे हम स्पर्म्स को स्टोर करेंगे। उसके साथ साथ this is where the sperm attains the motility. This is the site where I will be finding my sperms अटेंड मोटिलिटी। तो यहाँ पे उनकी मोटिलिटी आपको अटेंड होते हुए आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे बेसिकली दे आर गोइंग टू गेन सम काइंड ऑफ लाइक उनका मूवमेंट यहाँ पे आपका चालू होगा। सो दे हैव बीन स्टोर्ड ओवर देयर एंड दे ओवर हियर दे विल एंड द मोटिलिटी। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। अब आपको यहाँ पे और भी चीजें ध्यान रखनी है। तो पहले हमने दो चीजें यहाँ पे देख ली, दैट व्हाट आर माय सेमिनिफरस ट्यूब्यूल या एपिडाइमिस। अब इसके बीच में काफी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। यू कैन एक्चुअली सी नंबर ऑफ थिंग्स इन बिटवीन। तो यहाँ पे कुछ चीजों को मैं यहाँ पे लेबल करना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको एक कॉइल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस स्मॉल एरिया ऑफ दिस स्मॉल वेब जैसा जो एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड माय रेटिटेस्टिस। दिस इज कॉल्ड एज माय रेटिटेस्टिस, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको जो पर्पल कलर की आपको यहाँ पे जो लेबलिंग दिख रही है, दिस लेबलिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय वास एफरेंस। So you have this purple color label. Let me show you with the different color, right? This purple color labeling over here, this purple color labeling over here, this labeling over here will be called as my reference. मैं यहाँ पे काफी क्लियरली कह सकता हूँ कि वास रेफरेंस मेरा यहाँ पे ब्रिज है और ये ब्रिज को क्रॉस करके मेरे स्पर्म पहुंचेंगे मेरे यहाँ पे एपिडाइडाइमिस के पास। ये लेबलिंग को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन देम, यू विल फाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन देम। सो ये लेबलिंग को याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो याद रखना यू हैव अ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे आपके स्पर्म्स बनाए जाते हैं। इनको बना के मैं अल्टीमेटली स्टोर करूंगा मेरे यहाँ पे एपिडाइडाइमिस के अंदर, दैट इज वेयर आई विल बी स्टोरिंग देम। बट वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे कुछ चीजों को क्रॉस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी अ रेडी टेस्टिस में मैं भेजूंगा अपने स्पर्म्स को, and from there from the ready testes I will find them going via vas efferents. Vas efferents आपका यहाँ पे रिच बन जाएगा, उसके थ्रू they will reach towards the epididymis। वहां पे जाके फिर उन्हें हम वहां पे स्टोर करेंगे। तो ये एक पाथवे आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको ये कहाँ से कहाँ पे जा रहा है। फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल they are going towards the ready testes, वहां से they are going towards the vas efferents and going towards the epididymis के पास। तो चलिए हम इसे यहाँ पे वापस से देखते हैं। So these are the your basically this is the internal picture of your testes। आपको यहाँ पे लिखा आपको दिख जाएगा छोटा छोटा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, राइट। अब इनके बीच में
जो स्पेस होता है वहां पर आपको क्या मिल रहा है आपके यहाँ पे, इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल को हम बोलते हैं यहाँ पे लेडिक सेल्स, और लेडिक सेल से आपके यहाँ पे होते हैं जो आपके यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन को बनाते हैं, ठीक है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रखना, टेस्टोस्टेरोन की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक ग्रोइंग बियर्ड एंड चेंज इन द वोकल कॉर्ड आपका यहाँ पे होगा, एंड द वन व्हिच विल प्रोमोट जेनेसिस, right? Other immunologically competent cells are also present over here. Something we'll discuss them later. Now, so let's have a look at this picture again. तो यहाँ पे आप लेबलिंग को आप देख पाओगे, focus on the labeling over here. You have a vas efferens, जो आपका एक कनेक्टिंग ब्रिज है, वो एक आपका यहाँ पे ब्रिज है between the retitestis and my seminiferous tubule. Sorry, between the retitestis and my epididymis. Okay, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? The seminiferous tubule open into a vas efferentia. Excuse me. vas efferentia through the retitestis, right? तो मेरे यहाँ पे seminiferous tubule आपको यहाँ पे दिख रहा है. They will ultimately open into my arteries तक वो पहुंचेंगे, उस बीच तक वो जाएंगे, कैसे जाएंगे? Via my retitestis. कहाँ पे retitestis? I will mention this with the dark coloration over here. ये है मेरे यहाँ पे retitestis. I just want all of you to remember the pathway. That's why I'm बार-बार बता रहा हूँ. Okay. Now. So now you should know a network of tubules in the testes carrying the spermatozoa from the seminiferous tubule towards the vas efferentia. So vas efferentia is something you know. जो आपका content जाएगा, it will go towards the your epididymis. याद रखना ये जो content ये जो पूरा coil structure है ना आपके यहाँ पे, this is my epididymis. अब सवाल ये आता है कि epididymis में आपने अपनी sperm को store कर लिया. Now, as per the requirement, ये sperm वहां से कहाँ पे जाएंगे? So आपने epididymis के अंदर आपने sperm को store कर लिया, वहां से वो कहाँ पे जाएंगे? So सिंपल सी बात है, from here they will get into the vas deferens. So ये जो आपको long tube आपको यहाँ पे दिख रही है, this long tube over here is called as my vas deferens. So vas deferens is a long tube, और यहाँ पे आपके sperm यहाँ पे आपके भेजे जाएंगे. So this is where the sperm will be kept over there or will send over there. ठीक है? तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, राइट? सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन. तो ये लेबलिंग्स प्लीज हमेशा याद रखना, बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन दैट. ओके, अब वहां से क्या हो रहा है? सो आपका स्पर्म समझो आपका आ चुका है वास आपके एपिडिडाइमिस के अंदर, एंड नाउ एज पर द रिक्वायरमेंट नाउ स्पर्म विल मूव इनटू द वास डेफरेंस. सो वास डेफरेंस इज अ लॉन्ग कॉर्ड, यू कैन सी अ वेरी लॉन्ग कॉर्ड एज अ वास डेफरेंस, और ये पूरा आपका टर्न लगाती है आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से. सो दिस ओवर हियर जो आपने कलर नहीं करा हुआ, दैट इज माय यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज गोइंग टू बी यूरिनरी ब्लैडर. इट विल टेक अ कंप्लीट यू टर्न above the urinary bladder and then it will form something. तो देखो यहाँ पे होता क्या है, आपका जो vas deferens होगा ना यहाँ पे, assume that this is my vas deferens. एक पॉइंट आएगा, there will be one point that will have this deferens. I'll just write over here as a VD. And this vas deferens will carry the sperms. यहाँ पे आपके sperm हम carry करके यहाँ से आ रहे होंगे. एक जंक्शन आपका यहाँ पे आता है, and वो जंक्शन पे आपको यहाँ पे ग्लैंड मिलेगा. So there will be one junction where you will have one gland will be seen over there. There will be a junction where you will have one gland which will be seen over here. And the junction at which this gland will be seen, this gland over here is called my seminal vesicle. This gland over here is called as my seminal vesicle. अब ये जो आपके यहाँ पे ग्लैंड है, जो मेरा seminal vesicle है आपका यहाँ पे, ये और मेरा वास डेफरेंस कंबाइन करके बनाएंगे एक कॉमन आप यहाँ पे डक्ट. दे विल कंबाइन, विल गिव राइज टू कॉमन डक्ट ओवर हियर, एंड दिस डक्ट जो आपके यहाँ पे बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज माय इजैकुलेटरी डक्ट. दिस इज कॉल्ड एज माय इजैकुलेटरी डक्ट. तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपका इजैकुलेटरी डक्ट बनते हुए आपको मिल जाएगा. सो दे विल आस्क यू दैट where does the ejaculatory duct is getting formed, then you should tell them there is a when you have a intersection of my vas deferens and your seminal vesicle, जब आपके यहाँ पे intersect करेंगे तब आपको यहाँ पे एक duct बनेगा, and that duct is called my ejaculatory duct. So something you can see over here, there is something you can see over here जो मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ. फिर यहाँ से आपकी चीजें आगे बढ़ जाएंगी, and then they will go into the urethra. So वहां से आपका कंटेंट आपका जाएगा आगे बढ़ के, it will go into the urethra के अंदर. But इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये आपका ग्लैंड क्या करता है, विल सी दैट लेटर, कि आपका ग्लैंड यहाँ पे क्या सीक्रेट कर रहा है, विल सी दैट लेटर, बट अभी के लिए इतनी बात यहाँ पे याद रखना. ओके, तो दैट इज समथिंग वी हैव सीन.
It passes through inlingual canal in the abdomen and loops over the urinary bladder. यहाँ पे बात की जा रही है about your vas deferens कि ये जो loop over जो है ना आपके यहाँ पे that talking about the vas deferens कि यहाँ पे बात की जा रही है. ये होता है जो पूरा ऐसे पूरा सर्कल लगा के आपका वापस आएगा आपके, it will come into the urethra के अंदर. So vas deferens and a duct of vesicle unite to form a short ejaculatory duct. ये बनाते अपने यहाँ पे short ejaculatory duct जिसे हम even कहते हैं ductus ejaculatus. So this is what they will be forming over here. After this, तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली, तो प्लीज याद रखना epidermis आपके यहाँ पे क्या कर रहा है, right? What is my ejaculatory duct and where it is getting formed? This is something you have to know. ये है मेरे यहाँ पे pathway. So you can know the pathway over here. See the pathway. Citrus tubule into the ready testis. यहाँ से हो जाएगा वास एफ्रेंशिया के अंदर, वहां से जाएगा आपका इनटू द एपिडर्मिस जहां पे हम स्टोर करेंगे. फ्रॉम देयर वास डिफरेंस से देन यू विल फाइंड अल्टीमेटली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ माय एजेंट डक्ट. फ्रॉम देयर इनटू द यूरेथ्रा एंड देन इनटू द वजाइना वाया पीनस. दिस इज द पाथवे ऑफ माय स्पर्मेटोजोआ. ये रहेगा मेरा पाथवे स्पर्मेटोजोआ का. ओके, नाउ देयर इज वन थिंग यू हैव टू नो व्हेन यू टॉक अबाउट द यूरेथ्रा ना, इट इज अ कॉमन डक्ट. It is also called as my urogenital duct. ये आपका वो चैनल है आपका, या मैं कहूंगा आपका यूरेथ्रा आपका वो पैसेज है जहां से स्पर्म्स और यूरिन दोनों पास करते हैं. इट इज अ शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम. ये एक कॉमन डक्ट आपका होता है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम का. सो इट ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड पास वीनस. It opens outside by an external opening called as my urethral meatus. That's how it is going to open up, right? याद रखना urogenital duct आपका एक common passage है for the urine and your sperms के लिए. So this is something now it is very much clear to you कि कौन सा labeling आपके यहाँ पे क्या आ रहा है. That is something now clear to all of you. You can see the urethra and via penis you will find the sperms will be deposited in the female reproductive tract and that is what the penis as an external genitalia इसका काम होता है. So this is what we have understood in this. Now let's talk about my glands. What are the male external genitalia? That's the human penis, right? That the penis is going to be the external genitalia. इसका काम यहाँ पे क्या होता है? Serves as the duct. It serves as a urinary duct and also introment organ that transfers the spermatozoa into the vagina of the female. That's what it will be doing. Now let's talk about all the glands. तो हमने यहाँ पे हमारा reproductive system का like structure हमने यहाँ पे देख लिया. Now let's talk about all the glands we have. So glands की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पर seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral gland. अब सबसे पहली बात, अगर आपसे भी आके पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन सा ग्लैंड है जो आपका पैर में नहीं है, which is not in pair, then आपका आंसर यहाँ पे होगा आपका prostate gland. Prostate gland आपका ये सिंगल होता है. This will be single golf ball size का ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा. It will be single, right? It will be of a size of golf ball. होता है ना गोल्फ का, आपने कभी देखा होगा टीवी पे, सो उतने साइज का होता है, उसका होता है आपका वहां पे. देन वी हैव अ seminal vesicle and a bulbourethral gland. They are in pair, so this will be also in pair. ये भी पेयर में होगा and the seminal vesicle will be also in pair. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए क्या आती है, ये याद रखना कि ये ग्लैंड का सिक्रीशन यहाँ पे होता है. सो यू हैव दिस ग्लैंड्स ओवर देयर. व्हाट दिस ग्लैंड्स आर गोइंग टू सिक्रीट? ऑल दिस ग्लैंड्स आर गोइंग टू कलेक्टिवली सिक्रीट अ सेक्शन और उसको हम बोलते हैं आप एज अ seminal plasma. Seminal plasma. तो इन ग्लैंड से जो भी आपके यहाँ पे सिक्रेशन आएगा, इन ग्लैंड से जो भी आपके यहाँ पे सिक्रेशन यहाँ पे आ रहा है, that secretion is given a collective name and that secretion is called as seminal plasma. So seminal plasma आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा from these three glands. That is what they will be known for. तो हम यहाँ पे कुछ चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं. Let's quickly have a look at the few things. For example, if we discuss about my seminal vesicle, अगर मैं इस ग्लैंड की बात करूं तो सबसे पहली बात कि ये जो मेरा यहाँ पे ग्लैंड है, दिस इज अ ग्लैंड व्हिच आई विल फाइंडिंग इन अ पेयर, सो दिस विल बी देयर इन द पेयर, राइट? सो इट इज अ पेयर्ड ग्लैंड. वन थिंग, ये क्या सिक्रेट कर रहा है, तो आपको याद रखना है आपको जो seminal प्लाज्मा है, दैट इज द सिक्रेशन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम थ्री ग्लैंड्स. ये जो फ्लूइड का सिक्रेशन आपके यहाँ पे आ रहा है, उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आपका आता है seminal vesicle से. तो seminal vesicle is the one which will release around 60% of the, it will release 60% of seminal plasma. 60% of the seminal plasma आपका जो आएगा वो यहां से आएगा. So सबसे ज्यादा secretion आपका आ रहा है from the seminal vesicle. What kind of secretion it is going to have? It will have the alkaline secretion. It will have the alkaline secretion.
तो एल्कलाइन सिक्रेशन आपका आ रहा है फ्रॉम स्मॉल वेसिकल. नाउ दिस सिक्रेशन विल हैव व्हाट, इस सिक्रेशन में आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा. यू कैन हैव ओवर हियर फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज आपको मिलेगा. यू विल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ माय कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस आपको मिलेंगे. यू विल हैव प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन विल बी ओवर हियर. यहाँ पर आपको मिलेंगे कई सारे एंजाइम्स, number of enzymes can be seen, and you will also have a presence of a citric acid. आपको यहाँ पे मिल जाती है which are coming from the seminal vesicle. So that is what the secretion will have. इसके यहाँ से जो आएगा उसमें ये सब चीजें आपको मिल जाती है. अब फ्रुक्टोज जो आपको यहाँ पे होता है, फ्रुक्टोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. आपका जो स्पर्म होगा ना, अंडरस्टैंड वन थिंग, जब आपके स्पर्म यहाँ पे आएंगे, स्पर्म आर गोइंग टू मिक्स विद दिस फ्लूइड. स्पर्म जो आपके आ रहे होंगे ट्रैवल करके फ्रॉम द वास्ट डिफरेंस, दे विल अल्टीमेटली गेट मिक्स विद दिस पर्टिकुलर फ्लूइड. तो स्पर्म्स को एनर्जी चाहिए होती है स्विम करने के लिए, और एनर्जी आपको मिलती है फ्रुक्टोज से. सो फ्रुक्टोज विल बी द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देम. दैट्स वन थिंग. सेकंड थिंग, अगर आपको याद हो, अगर आप अपना 11th ग्रेड याद करो, तो 11th ग्रेड में हमने पता है पढ़ा था हमारा क्रेब्स साइकिल इन योर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. तो उसमें आपने ये टर्म देखा होगा सिट्रिक एसिड साइकिल, या सिट्रिक एसिड आपने ये टर्म वहां पे देखा होगा. तो ये सिट्रिक एसिड को वहां पे इस्तेमाल किया जाता है क्रेब्स साइकिल करने के लिए, ताकि आप अपने वहां पे एटीवीज बना सको, राइट. सो दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन यूज्ड ओवर हियर. आपके एंजाइम्स, कैल्शियम आयंस विल आल्सो हैव सम काइंड ऑफ रोल ओवर देयर. आई वुड रादर से दे विल हैव अ रोल इन फॉर्मिंग और ब्रेकिंग डाउन द क्लॉट जो आपका बनता है आफ्टर स्पर्म डिपोजिशन इन द फीमेल ट्रैक्ट. अभी के लिए आप इतना ऐड रख सकते हो. जो मेन चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, यू हैव योर फ्रुक्टोज व्हिच विल हैव अ रोल इन promoting, it will be a source of energy for the sperm. इसका इस्तेमाल करके ही स्पर्म के अंदर एटीपी बनेगा, और वो एटीपी का इस्तेमाल करके वो स्विम करके आगे बढ़ेगा. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस, राइट. Along with that, calcium ion, prostaglandin, enzymes and citric acid will also have a very important role in nourishment and the motility of the sperm. स्पर्म की मोटिलिटी और नरिशमेंट के लिए, दोनों के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इतनी बात रखनी है आपको याद in terms of my seminal vesicle. After this, you will have another thing, and that one thing is going to be your, let's talk about my prostate gland. Now, prostate gland will have slightly acidic secretion. तो इसका जो secretion यहाँ पे होता है, याद रखना, that's going to be slightly acidic. And this secretion will have number of proteins. So number of proteins have been seen in this secretion. तो ये secretion जो आपका आ रहा है, आपको दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है, that it will have slightly, it is going to be acidic, and this is the secretion which will have a large amount of proteins can be seen in this kind of secretion. आप एक जनरल ना टर्म तरीके से याद रख सकते हैं, this protein will also have a role to be played in the nourishment of the sperm. That is what they'll be doing over here. And after that, आखिरी जो आपको यहाँ पे ग्लैंड आएगा, that is my bulbourethral gland. Bulbourethral gland. Now this gland will also have a alkaline secretion. This gland will also have alkaline secretion, and this gland is known for lubrication of the penis. It is known for the lubrication of penis. एक बात याद है कि penis का जो lubrication होता है from the inner side, that is something which is happening from the secretion from the bulbourethral gland. एक और बात आप यहाँ पे याद रखना, it is known to neutralize. इसका काम होता है to neutralize the urethra, from acidic condition. बेसिकली आपका यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि आपको bulbourethral gland का secretion आएगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा आपके यूरेथ्रा को. किससे न्यूट्रलाइज करेगा? वहां पे एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज करेगा वो. आप ये बात समझो दैट योर यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म एंड द यूरिन. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट कि आपका वो जो रीजन है ना यूरेथ्रा का, उसे हम न्यूट्रलाइज करें, तभी तो आपके स्पर्म आगे बढ़ पाएंगे. अगर हम उसे न्यूट्रलाइज वहां पे नहीं करेंगे, देन यू विल नॉट फाइंड द स्पर्म कैन सर्वाइव ओवर देयर. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली, दैट यूरेथ्रा इज अ एरिया जहां से आपका यूरिन पास हो रहा होता है, एंड बिकॉज दैट इज एरिया फ्रॉम वेयर द यूरिन इज गेटिंग पास्ड, दैट एरिया विल बी एसिडिक. और उस एसिडिक कंडीशन को आपको न्यूट्रलाइज करना है, और उस एसिड कंडीशन को न्यूट्रलाइज आपने यहाँ पे bulbourethral gland आके अपना काम करेगा. So that when the sperm are passing through that particular region, the sperms do survive and they don't get killed. So that is what it will do. और इसके साथ it will also have a role in the
lubrication of the penis is also something done by my bulbourethral gland. You should know this thing very clearly that these are also the gland which will be in the pair. They are also going to be paired over here. ये भी आपको pairing आपको इनके आपको मिल जाएगी. So this is the story which you all have to know in this in terms of my glands. So ये आपके यहाँ पे acidic glands आपके यहाँ पे हो गए and these are the things they will be known for. So इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी. अगर आप इतनी बातें याद रख लेते हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, राइट? Spinal vesicle have a secretion of alkaline viscous fluid, forms the 60% of the semen, राइट? अच्छा, अब ये बात भी बता देता हूँ आपको, यहाँ पे इतनी बता चुका होता हूँ. जब भी आपके सामने यहाँ पे एक टर्म आएगा सीमन, that means what? Semen has a collection of two things: seminal plasma plus sperms. Seminal plasma plus sperms, they are collectively called as your semen. इनको बोलते हैं. तो जब भी आपके सामने सीमन यहाँ पे टर्म आएगा रखना, the semen will have sperms plus seminal plasma. Okay. So the fluid contains fructose, protein, citric acid, inorganic phosphorus, potassium, prostaglandin. Number of things have been seen over there. Okay. Then the prostaglandin will have a 15 to 30% of the semen secretion. तो ये काफी कम होता है आपके यहाँ पे. The fluid from the prostate is clear and slightly acidic. ये बात याद रखना. कई बार सवाल आपको आ सकता है. Of the three glands, कौन से gland का secretion आपके यहाँ पे slightly आपका acidic यहाँ पे होगा? The answer has to be your prostate gland. The prostate secretion activates the spermatozoa and provides the nutrition. The prostatic secretion activates the spermatozoa and provides nutrition. Same चीज यहाँ पे repeat हुई है. So it will provide the nourishment to the sperm. Then you have a corpus gland, a bulbourethral gland, secretes the alkaline fluid. Secretion lubricates the urethra and acts as a flushing agent. It washes the acidic urinary residues present in the urethra before the ejaculation. So it's something I've told you, ये neutralize करेगा आपके यहाँ पे urethra को from the acidic condition जो आपके यहाँ पे urine से आपकी create होती है. That is what it is known for, and it lubricates the urethra and the penis. This is what you have to know from your bulbourethral gland. चलो, इतनी बातें हमने यहाँ पे देख लिया. How it's clear to all of you. Now let's do one thing. Let's solve some questions. अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना. If a vas deferens of a man is surgically cut, अगर vas deferens को हम यहाँ पे कट कर देते हैं, then what of this four option you will find happening over here? Take your time and then raise your hand. Not raise your hand, write in the chat. अगर हम vas deferens को यहाँ पे कट कर देते हैं, then क्या हो सकता है आपका यहाँ पे? पिक्चर देखते हैं क्या? एक काम करते हैं, पिक्चर देखते हैं. पिक्चर हम यहाँ पे देखते हैं. अज्यूम करो कि मेरा यहाँ पे vas deferens है. या वो वाज डिफरेंस, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया. एज अ डॉक्टर मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया. अब अगर मैंने यहाँ पे कट कर दिया तो पहली चीज मुझे यहाँ पे ये बताओ कि अगर मैंने इसे यहाँ पे कट कर दिया तो क्या स्पर्म मेरा यूरेथ्रा तक पास हो पाएगा? वेल, विल द स्पर्म फ्रॉम हियर, विल द स्पर्म फ्रॉम दिस एरिया विल रीच द यूरेथ्रा? द आंसर इज नो, राइट? सो स्पर्म वोंट बी एबल टू रीच ओवर देयर. फर्स्ट थिंग, तो स्पर्म आपका कभी भी आपको यहाँ पे आगे तक आपको यहाँ पे पहुंच नहीं पाएगा. दैट इज समथिंग वी टू सी. तो स्पर्म तो आपको यहाँ पे जाएगा नहीं. But I can still find some reaching into the urethra, and that will be my seminal plasma. आपने इसको तो ब्लॉक कर दिया, आपने इसको तो कट कर दिया, but seminal plasma आपका आ रहा होगा seminal vesicle से, prostate gland से, and from your bulbourethral gland जो यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा. तो जब आपका seminal plasma यहाँ से आ रहा है, so that means your semen will not have the sperm, but will have the seminal plasma. देखो आप इस चीज को यहाँ पे. So if a vas deferens of a man are surgically cut or blocked, then what can the correct answer in this? Sperm in the semen. अब आप बता सकते हैं इसका आंसर. Someone has also answered over here. Military school संगरूर ने आंसर कर दिया. बाकी लोग क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? What can be the answer now? Yes, फिरोजपुर से भी हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है. It is going to be your option D. Sperm without semen without sperm. तो semen आपका यहाँ पे होगा, but उसमें sperms नहीं होंगे. You will only have the seminal plasma. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी. That is what you find happening with your in this condition. ध्यान से करना. Next question. Seminal plasma has sperm and secretion of. इसमें किस चीजों का आपको secretion आपको यहाँ पे मिल सकता है? मतलब बेसिकली पूछा है कि secretion आपका कहाँ से आ रहा है. चलिए, raise your hand to answer this. Not okay. Write in the chat. I have this habit of saying this. बताओ चैट में क्या होगा इसका आंसर. बताइए. So secretion आपका यहाँ पे कहाँ से आ रहा है बेसिकली? फिरोजपुर has given me the answer. बाकी लोग, I hope सबको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है. Basically, they are asking कि which are those glands.
जहां से आपका ये सिक्रेशन आपका आ रहा होता है। यस दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे। सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड कॉपर ग्लैंड, यहां से ही तो आपका सारा सिक्रेशन आपके यहाँ पे आ रहा होता है। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल द सिक्रेशन इज कमिंग। टेस्टोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय, आपका टेस्टोस्टेरॉन जो मेल सेक्स हार्मोन आपका यहाँ पे, वो कौन यहाँ पे सिक्रेट कर रहा है? विच ऑफ देम इज गोइंग टू सिक्रेट द, अरे बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर आ गया आपका यहाँ पे। दैट इज गोइंग टू बी योर लेडिक सेल्स, राइट। एंड दीज सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज माय इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये आपको मिलेंगे आपके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, इन दैट लोब्यूल के अंदर, लाइक यू विल फाइंड दोस सेल्स आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? कौन सा होता है आपके यहाँ पे न्यूट्रिटिव सेल जो आपको मिलता है आपके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर? अगेन काफी आसान सवाल है, आप लोग इसका आंसर मुझे यहाँ पे दे सकते हो। सो आई रिसीव द आंसर फ्रॉम फिरोजपुर, एमएसएफ 12th मेडिकल, तलवारा एंड जसविंदर राजपूत, राइट। इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए, यस, सर्टुली सेल्स, बहुत बढ़िया, ट्रू। देन वास, अब ये ध्यान से करना, वास एफरेंशिया आर डक्टिल्स लीडिंग फ्रॉम, ये वास एफरेंशिया आर द डक्टिल्स, ये कहां से कहां लीड कर रहे होते हैं? याद है ना हमने ब्रिज बनाया था, वी हैव मेड ऐसा कुछ, हमारा ब्रिज था वहां पे, देन इस साइड पे फिर आपके यहाँ पे कुछ ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर था आपका। सो नाउ यू हैव टू टेल मी कि जो ब्रिज आपका बना ये कहां पे लीड कर रहा है? अरे वेरी गुड, काफी जल्दी आपने आंसर कर दिया, राइट। इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। सो ये आपका लीड कर आपका रेटिटेस्टिस से आपके एपिडिडाइमिस की तरफ, राइट, वेरी गुड। सो इट इज गोइंग टू बी, और इसमें जाएगा आपका ये इनटू द एपिडिडाइमिस के अंदर वाया योर वास एफरेंशिया। If some reason vas efferentia in the human reproductive system gets blocked, अगर vas efferentia अगर आपके यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, then the gametes will not be transported from, so gametes कहाँ से कहाँ नहीं जा पाएंगे? अगर vas efferentia अगर हमारे यहाँ पे ब्रिज अगर हमारा यहाँ पे ब्लॉक हो गया, तो कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएगा? स्क्रीन नहीं चल रही, अच्छा मेरी स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही आप लोगों को यहाँ पे? बता दो एक बार, जस्ट इधर अनम्यूट करके बता दो, या फिर या टेल मी इन सम वे कन्वे मी दिस, अगर स्क्रीन नहीं चल रही तो। Seems like no sir, बेटा बाकी लोग को दिख रही है शायद से। Is this a concern with the Sangrur on all or other classes also having the issue कि मेरी स्क्रीन यहाँ पे अटक रही है, चल नहीं रही? People are just answering right now. Okay. I think बेटा एक बार देखना अपने end से, because it is I think fine for the schools. So yes, it is between the रेटिटेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस के बीच में आपका यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन आपका होते हुए आपको मिलता है। अगर तो हमने आपने इसे ब्लॉक कर दिया तो ये आपका ट्रांसफर बंद हो जाएगा, ठीक है। आई होप पहले बताओ कि सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है। टेक योर मोमेंट एंड टेल मी दैट आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। Leydig cells as found in the human body are secretory source of, okay, Talwara and all the other schools have answered this jaldi and that is going to be a correct answer. Sangrun का भी यहाँ पे आंसर आ चुका है, that's true, it is my option D, androgen, that is your testosterone, that's true. Okay, now the shared terminal duct of reproductive and urinary system in the human male is, कौन सा होता है आपका common duct for the urinary system as well as in the human male and the reproductive, इनके लिए आपका common duct आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? So now you have answered, 3 स्कूल से मेरा यहाँ पे आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा होता है आपका common duct, terminal duct between the urinary system and the reproductive system. Yes, it is always going to be a urethra, यही आपको वहां पे आप करेगा common duct, और इस duct को हम lubricate करते हैं using my bulbourethric gland. Right. So these are the questions we have solved. Okay. So we are done with the basic outline of the male reproductive system. Now we have to start with the female reproductive system. We hardly have like 4 minutes. So at least understand few things over here. When we discuss about the female reproductive system, the first thing you have to know that the primary sex organ here is going to be the ovary. The primary sex organ is always going to be the ovary. Right. This is a site where we will find the ova formation we will see. यहाँ पे ova formation आपको होते मिलेगा. And along with the ova formation, this is also a site from where we will find some female sex organs are going to be released. So female sex organs आपके यहाँ पे क्या होता है? The female sex organs are always going to be your estrogen,
and your progesterone. So progesterone, estrogen are the couple of female sex organs which you will find coming from the ovary as the requirement, right? Along with that, you'll be having the fallopian tube. This is the site from where the gametes are going to get transferred over there, right? You have the uterus. Uterus is a location where the implantation takes place. यहाँ पे zygote बनने के बाद implant किया जाएगा, and then you have a small region of a cervix, and then the vagina where the male gametes will get deposited. तो इन सारे structures को भी हम detail में कल देखेंगे. We'll try to understand all the structures and we'll understand what kind of things will be happening inside the ovary and how they will actually play the role over there. So that is something we'll try. हर एक चीज को हम यहाँ पे डिटेल में कल की क्लास के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे. I would strongly recommend कि आप लोग एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लो एंड कोशिश करो कि ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो मेल पार्ट से. कल हम लोग जब मिलेंगे विल कंप्लीट दिस एंड विल आल्सो कंप्लीट वन मोर टॉपिक अलोंग विद दिस. सो कल हम थोड़ा सा क्लास को फास्ट रखेंगे एंड विल ट्राई टू कवर फ्यू मोर थिंग्स अलोंग विद दिस. अच्छा, ये बात आप मुझे बता सकते हो अगर आपको लग रहा है कि क्लास थोड़ा वैसे ही फास्ट जा रहा है, देन यू कैन जस्ट लेट मी नो. इफ यू वांट मी टू स्लो डाउन अ बिट तो बता दो. अगर आपको लग रहा है कि जो चल जाए वो ठीक है और थोड़ा फास्ट हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आल्सो यू कैन जस्ट लेट मी दैट. Right. So this is something I will start tomorrow, right? So from tomorrow onwards, we'll be starting over here and see all the instances of the ovary and everything. We'll try to see that, right? Okay. So that is something we have done आज की क्लास में. So now I will wrap this up. If you have any kind of question, अगर आपका कोई सवाल है यहाँ पे, then please go ahead and ask your question. If any school has any questions, I get the doubts cleared. We still have 2 minutes, so we can actually do that. If anyone has any kind of questions. Right. अच्छा, if you want to add certain things, अगर आपको लग रहा है अगर आपको कुछ ऐड करना है अपने एंड पे तो भी आप बता सकते हो कि सर we have to solve this kind of questions or we have to solve this content. If there's something you want to share, you can share that with me. Okay, all right. So let's wrap this up. In that case, we'll catch you again after some time. That is tomorrow.